In first part of the Manipur violence analysis, we discuss about the previous year question paper patterns, themes, and basic understanding through which we should, approach this paper and make the content, revise it multiple times, and write good answers. And sorry for the background noises which is happening. A little bit some technical issues is going. That's why I have to record in this situation. I am extremely sorry for this. Okay, so let's continue the part which we left there. So first we'll discuss about the news. What is the news? Actually what happened what is that 63 kilometer south of Manipur capital Imphal, there is a region called Chura Chandpur. Okay, so clashes erupted here in a very wide and spread from here to the other part of the Manipur, and the situation is that 8 out of 16 districts has been affected, and internet shutdowns, outside order, and many instances has been taken by the government to overcome the clashes. Now the big reason is, what is the issues about, what is the violence about it means. Before that, one things which we need to know that कि ये 3 मई से 3 मई 2023 से ये वायलेंस हो रहा है. That is the time from when it is happening. सवाल है क्या है, मणिपुर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पेश किया. उस ऑर्डर में शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी मणिपुर के द्वारा मीती कम्युनिटी, जो कि वहाँ पे अभी नॉन ट्राइबल ग्रुप है, उसको स्टेटस एसटी का डिमांड जो था उसको अप्रूव किया, और स्टेट को डायरेक्ट किया मणिपुर हाई कोर्ट ने कि इनके डिमांड को कंसिडर किया जाए. इसी डिमांड के अगेंस्ट एक ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च जो है वहाँ के लोकल स्टूडेंट यूनियन ने बुलाया. ये जो ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट बी कंफ्यूज प्लीज. देयर इज अ 3 ट्राइब, मीती. First classify 2 tribes. We'll discuss it in detail, don't worry. Other tribes. So other tribes are classified into 2 group. Any Naga, Any Kuki. Clear? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. और एक तरफ है मीती. इनको एसटी का राइट अभी नहीं है, एसटी का स्टेटस नहीं है. इन लोगों को एसटी बोले तो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया हुआ है. इनके पास शेड्यूल कास्ट का स्टेटस है, ओबीसी का स्टेटस है, ईडब्ल्यूएस का स्टेटस है, बट एसटी का स्टेटस नहीं है. एसटी के स्टेटस हो जाने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन, या एसटी के स्टेटस न होने से क्या होगा, दैट वी विल डिस्कस. दैट्स अ मेजर इशू वी नीड टू डिस्कस. हम लोग करेंगे, सब करेंगे, बट अभी फिलहाल आप ये समझो कि 2 कम्युनिटी है, एक को ट्राइबल का स्टेटस है, एक को नहीं है. उसी स्टेटस का डिमांड हुआ. मणिपुर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, यस स्टेट शुड टेक स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन. उस ऑर्डर के अगेंस्ट में ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च वहाँ पे जो लोकल स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने लेके आया कि हम इस ऑर्डर को नहीं मानते हैं. क्या नहीं मानते हैं? तो ये जो मीती है, ये जो ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च स्टूडेंट के यूनियन के द्वारा लिया गया था, वो इस ग्रुप से बिलोंग करते थे. इस ग्रुप से ये काफ़ी खफा थे कि भाई ये तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वाई हाउ कैन यू डू दैट, राइट. सो दिस वाज द इशू. इसके वजह से क्लैश हुआ. अब है कि क्या यही एक रीज़न था? तो आंसर इज बिग नो. दिस इज नॉट ओनली द रीज़न दैट की वायलेंस हैपेंड. देयर आर मैनी अदर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. So answer is the big no. कि क्या सिर्फ only this is the reason? तो no. There are many other reasons which we need to focus on. Like, first, there are some past events which are responsible for this violence. Past events means, I mean, there are some historical background, historical events which is responsible, which we will discuss in detail in the next section. There are some contemporary issues as well which are responsible for this violence, apart from the ST demand and some other issues, which we will also discuss in the next session, next slide. And first one, the foremost is the immediate reason. So immediate reason, as I explained, is the tribal solidarity march, which was called to oppose the Manipur High Court order to issue direction to the state to consider the demand from the Scheduled Tribe Demand Committee of Manipur for Meeti community. As I explained you, there are two community groups in the Manipur. First one is the Meeti and second is the other tribes.
Other tribes has been classified into two groups, any Naga tribes and second any Kuki tribes. So any Naga and any Kuki tribes, it means the other tribe groups are basically opposing the demand of the Meitei community for the ST status. Clear? This is the first immediate reason. Second immediate reason is about the drug drive and the action against the encroachment. This is Mr. CM of Manipur, that is Biren Singh. He has issued a drive against the encroachment. What is the encroachment? The encroachment is basically of the wildlife sanctuary, protected areas, national park by whom? Kuki's tribe. For what? For poppy cultivation and drug businesses. So immediately Biren Singh has ordered the officials to clear the encroachment, and this has been sought as the violation of Article 371C. Kuki tribes are saying that it is the clear violation of Article 371C. So what is Article 371C? So if we discuss about the Article 371C, so this is basically the प्रेसिडेंट की मर्जी से कोई भी एरिया एक डिक्लेयर किया जाएगा. जो एरिया अभी फिलहाल वहाँ का हिल्स एरिया डिक्लेयर किया गया है, जहाँ पे एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को वो कंडक्ट करे, और इसका रेगुलेशन सारा कौन करेगा? गवर्नर करेगा. गवर्नर विल बी सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द execution and supervision of the committee, regulation of the community, right? As per the desire of the president, there will be an area, and that has been designated as hills right now, and there will be constituted a committee for the autonomous administration of that particular area. So if a CM, chief minister of the state, order such order against the encroachment, so this is a violation of 371C, because there is already a committee of the from the hills for Manipur legislative committee for the administration, which are created by as per the desire of president. So they say that it is the clear violation. So these issues has been there, but these two immediately spark the event and violence, and this has taken a large form. So this is the immediate reason. Next, some other contemporary issues. When we talk about some other contemporary issues, the first is the encroachment we talk. So directly related to encroachment, there is a drug problem, as I have discussed right now, drug businesses or poppy cultivation. So drug problem is already there for last few months and years in the state. So if there is a anti-drug drive is there, anti-drug drive, right, destroying poppy cultivation, right, illegal settlers like Kuki, Jomi tribes of Manipur. These tribes has been termed as illegal settler by state. Especially all these things happened in Chura Chandpur, from where the violence erupted on large scale. Due to refugee crisis, many more such villages happened, took shelters there, and this is happening. Drug businesses, poppy cultivation. So government took a stand against him, but they are saying this is the clear violation of Article 371C that I just explained. So the first other issues is the drug issues. Second, when we talk about from the other issues, is the delimitation process. Delimitation process which is happening there in 2020. Both tribes have their concern. Meitei tribe says that census does not reflect the population breakup in the state, whereas Kuki tribe says कि हमने तो 40% ग्रोथ किया है, बट हमारा जो स्ट्रेंथ है अभी भी 20 है आउट ऑफ 60 MLA इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. अब ऐसा कैसे चल सकता है? ये भी एक इशू चल रहा है. तीसरा है, जैसा मैंने ड्रग ड्राइव प्रॉब्लम में बताया, माइग्रेंट्स. फरवरी 2021 का म्यांमार कूप जो हुआ था, राइट, म्यांमार कूप में बहुत सारे माइग्रेंट्स रिफ्यूजीज यहाँ पे आ गए थे, और दूसरे जो बांग्लादेश हैं एंड बांग्लादेश से म्यांमार से यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है.
अब इससे क्या होता है, जो रिसोर्सेज हैं, जॉब है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डिवाइड होता है। इससे जो वहाँ के लोकल कम्युनिटी है, मिती हो या फिर अदर ट्राइब हो, उनको इससे परेशानी होती है। तो ये भी टसल का इशू पहले से चला रहा है, ये भी एक इतनी क्लासेस लेके आ रहा है। क्योंकि अब यू विल से क्या यार बाहर के लोग आ रहे हैं तो फिर बाहर के साथ उनका होगा, नहीं, बाहर के जो इन्फिल्ट्रेशन है वो म्यांमार से हैं, बांग्लादेश से, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। तो वो कुछ कोई कुकी ट्राइब है, कोई नागा है, राइट, कोई मिती है, तो वो क्लासेस लेके आते हैं। समवन इज सपोर्टिंग देम, समवन इज अगेंस्ट देम, राइट। सो दीज आर द इश्यूज। अदर इश्यूज में इफ वी टॉक, फोर्थ इज द fourth, I talk about the encroachment, which is also the immediate reason that I explained in detail. So these are the issues which is happening apart from the immediate reason. Next part we are going to discuss about the third reason is the historical reason, which we will discuss in the historical part section. But before that we are going to discuss about the demography of the Manipur, because it is the sole responsible before the ethnic composition, its issues and effect. So in next part of the video we will discuss about the historical background reason and the demography issue and its effect. Thank you so much.